but I was not even knowing binary tree, binary searches, and all those things. So that's where I started preparing. I started with same like 3 LPA, which general fresher starts in service-based companies, right? There are people tells कि ठीक है, it was my dream to work at Google, Microsoft, but मेरे केस में even dream was not up to that level, right? You don't just need DSA, but you also need good on system design, the framework that you are working on. I used to read that, okay, what all kind of questions are being asked in all these big tech companies. तो वहां भी मुझे दिखा कि आई एम नॉट इवन 20% और 30% प्रैक्टिस मच, बट वैसा नहीं होना चाहिए कि ठीक है एक वीक के लिए मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ, मैंने मतलब 10-10 12-12 क्वेश्चन एक दिन में कर लिए, बट ठीक है एक वीक के बाद मुझे मोटिवेशन नहीं आ रहा, मैं हैंग आउट कर रहा हूँ कहीं भी, कुछ भी वॉट एवर आई वाज अप्लाइंग फॉर आई वाज गेटिंग इनटू इट. सो आई हैड इट फ्रॉम गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, OCI, RCSIAM, Intuit. So काफी सारे ऑफर्स थे उस टाइम पे मेरे पास. आई वाज नॉट अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, आई कैन से, राइट. मैं कभी बैच में टॉपर नहीं रहा हूँ, राइट. आई वाज काइंड ऑफ मीडियोकर, एवरेज ही था हमेशा से. So hi Rajmani and welcome to the Code School. Hey, hi Divanshu. या सो राजमणि बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं. जब आपका अर्ली एजुकेशन चल रहा था, स्कूल चल रहा था, वहां से स्टार्ट करते हैं. तो आपका कोडिंग में, वहां पे कंप्यूटर साइंस में कोडिंग में कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ, एंड फिर कॉलेज में जाके आपने कैसे उस इंटरेस्ट को कंटिन्यू किया, एंड कॉलेज में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? Okay, so basically coding, I mean, I got exposed to the coding in class 11th itself. वहां से मतलब I am from Navodaya विद्यालय, so वहाँ पे 11th 12th में you get the I mean exposure to computer science. तो basic C++ and SQL वहाँ से आया, and then that और मुझे actually mathematics में इतना कुछ खास इंटरेस्ट था भी नहीं, तो I was always certain कि ठीक है मुझे computer science ही करना है. So I have even asked my teachers that, okay, if I can just, I mean, get into engineering college for computer science without, I mean, giving IIT or AAA, but that was the only thing by which you can get into. So that's how it started, and I moved to my college, and I mean, I have chosen a college for computer science. Basically, I was getting good college in other branches, but yeah, I just wanted something to pursue in computer science. तो वहां से ये स्टार्ट हुआ. द कोडिंग कल्चर वाज नॉट दैट ग्रेट, बट या समहाउ आई मैनेज्ड देयर. एंड आपका फर्स्ट जॉब फिर वहां पे कैसे लगा कॉलेज के बाद? ओके, तो कॉलेज में प्लेसमेंट था ही नहीं, इट वाज जीरो. सो मैं बैंगलोर आया टू लुक फॉर ऑफ कैंपस जॉब्स, और यहाँ पे ठीक है भाई, मतलब वी यूज्ड टू ट्रैवल अराउंड, सी व्हिच कंपनी हैव ओपनिंग्स. देयर वाज अ फ्यू फेसबुक पेजेस जो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे आपको कि मतलब क्या क्या कहीं पे है. देयर वाज सम वैलिड, सम नॉन वैलिड, सो वी यूज्ड टू जस्ट गो रोम अराउंड एंड देन चेक फॉर द ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स. एंड ऑब्वियसली कंपनी कैरियर पोर्टल्स थे ही, तो वहां पे अप्लाई करते थे. एंड देन वही 4 से 5 महीने लगे, एंड देन विद इन दैट टाइम फ्रेम आई गॉट माय फर्स्ट जॉब एट HP. So कॉलेज के बाद विदाउट हैविंग एनी जॉब, देन यू मूव टू बैंगलोर इन सर्च ऑफ अ जॉब. राइट. तो आई थिंक इट्स अ वेरी बोल्ड मूव फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड आपने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया, उनका क्या रिएक्शन था इस पे कि हाँ आप बैंगलोर जाके जॉब ढूंढ लो? एंड आई थिंक बहुत उस टाइम पे तो काफी डिफिकल्टीज भी आपको फेस करनी पड़ी होंगी ना, कुछ ज्यादा उस टाइम पे लिंक्डइन होगा और बहुत ज्यादा मतलब कनेक्शन नेटवर्क इतना स्ट्रांग नहीं होता. सो वो कैसे आपने चैलेंजेस क्या क्या फेस किया और कैसे ओवरकम किया उसको? ओके, बेसिकली एक जो मेरे साथ अच्छी चीज थी, मेरे फ्रेंड्स हमेशा साथ में थे. तो वी वर लाइक 3-4 फ्रेंड्स जो हम साथ में बैंगलोर आए. और पेरेंट्स तो उनका ये था कि ठीक है भाई, इंजीनियरिंग तुमने कंप्लीट कर ली है, यू नीड अ जॉब, राइट. तो यू नीड टू गेट समवेयर. तो दैट वाज नॉट अ डिफिकल्ट पार्ट फॉर मी एटलीस्ट, क्योंकि एवरीवन नोज कि ठीक है, इफ यू वांट टू बी एन एक्टर यू नीड टू गो टू मुंबई, एंड इफ यू वांट टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर यू नीड टू कम टू बैंगलोर, राइट. सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड एंड आई केम टू बैंगलोर. So basically the good thing with Bangalore is यहाँ पे जो PG है, you get in there and then all the people are looking for a job, so you just get into it, right? You will not even feel कि ठीक है मैं अकेला हूँ, सब वैसा ही कर रहे हैं, तो it gets easier. तो basically obviously जब सब लोग होते थे, तो that time Google Map was not there, not many job portals were there. तो वही था कि हम जो है मतलब सिर्फ सर्च करते थे गूगल पे, बस नंबर BMTC के दिखते थे, तो हम बस वो लिख के लेके जाते थे कि ठीक है इस बस स्टॉप तक जाना है. Obviously pronouncing those bus stop names was also difficult that time, because once you come from North India and then I mean the nomenclature changes.
तो हम वो लिख के लेके जाते थे। कई बार तो कंडक्टर को दिखाना पड़ता था कि ठीक है भाई, ये बस स्टॉप का नाम है, so this is the place where I need to get down. तो the good thing was people were very helpful. वो आपको बता देते थे कि ठीक है आप यहाँ पे चले जाना, ऐसे चले जाना। तो that was the thing for us. Hmm. I think it takes a lot of courage to, move to a big city like Bangalore without having any source of income. Like Bangalore तो है भी इतना expensive city, and I'm sure उस time पे भी होगा ही comparatively. Right. So it takes a lot of self belief, I think, and बहुत सारी जो audience है वो भी I think इसी stage पे होंगे, and but they are afraid to take that step, right? So I hope your story motivates them, and I am sure it definitely will. And moving back to my question, so मैं आपका LinkedIn देख रहा था, and उस पे I saw you have worked in service based companies and product based companies like HP, Nokia, Symantec, VMware. तो वो आपका करियर प्रोग्रेशन कैसे रहा, और हर बार like what motivated you to switch companies and move to a maybe higher salary, and कैसा आपका करियर प्रोग्रेशन और सैलरी प्रोग्रेशन कैसा रहा फिर? Okay, so जैसा मैंने बताया कि I mean October 2012 was my first job when I joined HP. वहां पे as you mentioned it was a service based company. I was working for American Airlines, so 2 साल तक it was good. I mean learning wise I got to learn so many things, but obviously जब आप आते हो you have big dreams, so आप you don't want to stuck at one place, right? So I learned, and after 2 years I realized that okay, whatever was meant to learn there, I have learned those things, basic Java thing and writing soap based services that time. तो वो मैंने कर लिया, and then obviously this thing was coming into the market that okay, product based companies are the gonna be the next thing. So and I got it from some of my seniors also कि ठीक है, they were moving to product based companies, so that motivated me to again prepare for the interviews and then get my job. So till that time I was not even exposed to the basics of the data structures and all those things. मतलब coding वगैरह ठीक थी, writing all those forms and everything was good, but वो इतना in detail में नहीं था कि ठीक है. I was not even knowing linked list basic. I mean, adding, deleting operation, all those was fine, but I was not even knowing binary tree, binary searches, and all those things. So that's where I started preparing, and that have led me to Nokia. I worked there for almost 2.5 years. It was a desktop applications that time. So yeah, after 2.5 years, I realized that okay, I know that, and obviously, as I mentioned, I need to make my next move. And then I went to Symantec. It was a great company to work for. I worked there on really good projects on certifications and security. Right, so that was good, but yeah, I mean, sometimes not everything works as you wish. So DigiSat acquired Symantec, the division that I used to work for. So we had this thing that okay, whether we want to continue, I mean, and wait for management to take decision, or we want to make our own decisions and then have certainty in life. And that's where my team got splitted. Half of them went to Walmart, half of us went to VMware. So, and I was part of the VMware team basically. So I made my transition to VMware, right? So that was my one of my biggest achievement till that time, right? Getting into VMware was not that easy. And once I got into VMware, yeah, got into one project, but yeah, that got deprecated after almost a year. So I was given to work on a different team. So वहाँ पे the work was not that great for a developer. In case you are a security enthusiast, it was really good. But developer के पास से उतना अच्छा नहीं था. So then I tried it for almost 2 years. I went in kind of comfort zone that okay, ठीक है यार, अच्छा तो चल रहा है, पैसे अच्छे मिल रहे हैं. Then you are ज़्यादा काम भी नहीं है, लोग वैल्यू करते हैं आपका काम का, तो वो सारी चीजें ठीक थी, बट लर्निंग वाज गेटिंग स्टिल, राइट? सो दिस इज व्हाट माय करियर प्रोग्रेशन वाज बिफोर माइक्रोसॉफ्ट. ओके. And I think that's very inspiring, the journey. You're always eager to learn, right? So that motivates you to always look for better opportunities. And one more thing, if you don't mind sharing, so आपका like salary progression या hike progression कैसा रहा when you used to switch companies? तो वो कैसा रहा? Okay, so the salary progression was good. I started with same like 3 LPA, which
general fresher starts in service-based companies, right? हम्म So, but yeah, when I went to Nokia, it was kind of 100% of what I was getting there. So around 7, 8 somewhere, right? Then again, I mean, when I joined Symantec, it was again kind of 100%. हम्म And from there to VMware, again kind of 100%. So that's the kind of progression that I had. And हम्म obviously, I mean, from VMware to Microsoft, it was not. I mean, every companies have their own standards. So I was already in the higher bucket, but it was good on that part. हम्म ग्रेट एंड राजमनी फिर जब आप VMware में थे आप काफी कंफर्टेबल हो गए थे एंड सैलरी भी अच्छा था देन जो नेक्स्ट स्टेप उसके बाद लेना था माइक्रोसॉफ्ट में जाना वो कैसे आपके दिमाग में मोटिवेशन आया और कैसे आपने आपके दिमाग में आया कि अरे हाँ अब मुझे नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट में या किसी बड़ी कंपनी में जाना चाहिए तो वो प्रोग्रेशन कैसे हुआ ओके एक चीज जो मैंने नोटिस की है इंडस्ट्री में कि आई मीन एंड दिस मेनी ऑफ द पीपल टेल्स राइट दैट यू आर एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू आर विद तो यस एंड दैट थिंग हैव वर्क रियली वेल फॉर मी मतलब जब आप एचपी में थे तो वो 5 के एवरेज से आप थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश करो यू वेंट नोकिया एंड देन उन 5 के एवरेज से तो वो चीज मेरे लिए काफी सही रही है और जब मैं VMware में था तो आई सॉ माई कलीग्स मूविंग टू गूगल माइक्रोसॉफ्ट सो एटलीस्ट टिल VMware मैंने कभी सोचा नहीं था कि क्योंकि जब आप बेसिक एक नॉर्मल कॉलेज से आते हो आपके पास एक जॉब नहीं रहती है और आप I mean, basic services company से start करते हो तो you never dream of it, right? There are people tells कि ठीक है, it was my dream to work at Google, Microsoft, but मेरे केस में even dream was not up to that level, right? So that was the thing. But हाँ, जब VMware में आ गए तो ये लगा कि नहीं यार मेरे colleagues जा रहे हैं तो even I can do that, right? So that was my trigger point of thinking कि ठीक है, I can make to all these big tech companies. एंड देन राजमनी माइक्रोसॉफ्ट और बाकी बिग कंपनीज के लिए जब आप प्रिपरेशन करने लगे तो वो आपने कैसे स्टार्ट किया ओके सो बेसिकली हुआ क्या है कि एज आई टोल्ड कि आई वेंट इन कंफर्ट जोन इन VMware जब तक ऑलमोस्ट 2.5 3 साल हो रहे थे जब मुझे रियलाइज हुआ कि ठीक है आई नीड टू आई मीन लर्न समथिंग न्यू तो उस टाइम पे आई अप्लाइड फॉर अ टीम आई मीन दैट वाज इन VMC आई थिंक so it was collaboration between VMware hypervisor and Amazon's this AWS. So basically, that was VMC. I mean VMware on cloud kind of thing. So when I applied for that team, and I saw in the job description about the tech stack that they are working on, it looked really inspiring. But उसमें अप्लाई करने के बाद I got rejected after 2 rounds. And then I realized that, okay, my DSA is still average, but as I'm applying for senior positions, so my kind of my system design should be stronger, which is not in place, right? So I need to brush up my things and then get it forward. So then I asked HR the interview pattern there, and even they were like, in case you want to move internally, also you need to go through all those 4 5 rounds. And that was my thing that okay, in case I have to, I mean, again prepare, which I didn't wanted to actually, but yeah, that was my trigger point. That okay, if I have to prepare again, then let's just dream big and make it to the big companies. And that's when I started preparing for all these big tech companies. एंड देन राजमनी जैसा आपने बताया आपको एक नॉलेज गैप दिखा अपना कि अगर मैं नेक्स्ट एक स्टेप लेना चाहता हूँ तो एक गैप है तो वो गैप को आपने कैसे फिल करना स्टार्ट किया और कैसे आप फिर उसकी तरफ बढ़े अपने गोल की तरफ ओके सो इसमें एक चीज था कि मुझे ये समझ में आ गया था कि जो मैंने पिछला इंटरव्यू दिया है वो ऑलमोस्ट 3.5 4 साल हो रहा था 3 साल हो रहा था तो अगर मतलब दैट टाइम इट वाज फॉर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काइंड ऑफ रोल बट वहां से जब आपको एक लीड या स्टाफ इंजीनियर या प्रिंसिपल इंजीनियर टाइप के रोल्स में जाना है तो यू डोंट जस्ट नीड DSA बट यू ऑल्सो नीड गुड ऑन सिस्टम डिजाइन द फ्रेमवर्क दैट यू आर वर्किंग ऑन तो वो सारा गैप मुझे दिखा कि ठीक है आई मीन मुझे वो सारा फिल अप करना है राइट एंड फॉर दैट आई स्टार्टेड विथ माय ओन मैंने ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने प्रिपेयर किया बट आई सॉ एंड जब भी मैं प्रिपेयर करता था तो थिंग वाज अभी तो काफी सारे रिसोर्सेस आई यूज्ड टू गो टू दिस
lead code ka that interview section, I used to read that okay what all kind of questions are being asked in all these big tech companies. तो वहां भी मुझे दिखा कि आई एम नॉट इवन 20% और 30% देयर, राइट. हर बार जो है हर मतलब जनरली वीकेंड पे मैं पढ़ता था वो. तो जब मैं वीकेंड पे देख रहा हूँ कि यार ये ऐसा है तो ये तो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए, आई एम नॉट एबल टू सॉल्व दैट. So that's when I thought that okay, it's not just your preparation, क्योंकि अब you have a family, you cannot give your entire day, and you are kind of a very active contributor to the team, right? You are a working professional, so you don't get that much time to just go experiment anything on YouTube, or there are various websites, so you don't have this time to just go experiment there and try out your things. तो तब मुझे लगा कि in case I want to make it to the bigger organizations, I need to have some kind of structured curriculum which can keep me motivated for quite a long, right? Maybe. मतलब basically my thing was कि if you're just solving even 2 or 3 problems for 2-3 months or 4 months, you will get good question bank, you can practice much. बट वैसा नहीं होना चाहिए कि ठीक है एक वीक के लिए मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ, मैंने मतलब 10-12 क्वेश्चन एक दिन में कर लिए, बट ठीक है एक वीक के बाद मुझे मोटिवेशन नहीं आ रहा, मैं हैंग आउट कर रहा हूँ कहीं भी कुछ भी. सो दैट वाज माय थिंग एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू टेक अ प्रोफेशनल हेल्प काइंड ऑफ. तो मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया कि भाई मतलब क्या क्या है जो मुझे मोटिवेटेड रख सकता है, कहाँ से मैं एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम ला सकता हूँ. एंड दैट्स व्हेन माय फ्रेंड टोल्ड मी अबाउट स्केलर. So, and I have gone through a research about it. So there are 3 things that, have really helped me. One, live lectures, obviously. So if the lectures are live, then you basically have to, make that routine to go and attend them, right? And you obviously get, this thing that, okay, when your instructor is telling you the question, he also gives you some time to basically think about it, come up with your own version of solution, and that really helps you during your actual interview. Because जब आप किसी से actively interact करते हो, you put your thoughts, he will tell that okay, this is how it will work or it will not work. तो वो डिस्कशन काफी हेल्दी होता है, तो आपको एक काफी लंबे टाइम के लिए आपके दिमाग में वो रह जाता है. इवन इफ द क्वेश्चंस आर नॉट डायरेक्ट इन द इंटरव्यू, still you will be able to make out something from some discussion. So wo ek cheez that have really helped me. Obviously the homework and assignment, so in case you are getting something that okay, this is what you need to solve today or tomorrow, so you have a defined path that you are following. So those are the things that have really helped me. And obviously the mentorship, if someone is behind you all the times, right, wo aapka mock interview le raha hai har baar और आपको बता रहा है कि ठीक है मतलब मैंने ऐसे किया था, जी आप अच्छा कर रहे हो, जी आप अच्छा नहीं कर रहे हो. तो बेसिकली रेगुलर फीडबैक्स आप कहीं से भी लो, डजंट मैटर कि आप कौन है क्या है, इफ द पर्सन हैव डन इट एंड वो आपको बता पा रहा है कि ठीक है आपने ये सही किया है, ये सही नहीं किया है, तो दैट मेक्स अ वे फॉर यू. एंड दैट्स व्हाट आई गॉट फ्रॉम स्केलर एक्चुअली. सो दैट वाज माय थिंग. ऑसम. आई थिंक स्केलर ने तो काफी हेल्प किया आपकी. दैट्स ग्रेट टू नो. एंड उसके बाद जब आपने अप्लाई करना स्टार्ट किया कंपनीज के लिए, तो कहाँ कहाँ से आपको फिर जॉब ऑफर मिले, एंड देन हाउ डिड यू डिसाइड कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ही जाना है बाकी ऑफर्स में से? ओके, सो इसमें आई हैड मल्टीपल ऑफर्स. मतलब जैसा मैंने बोला कि बिफोर प्रिपरेशंस मुझे ये सर्टेनिटी भी नहीं थी कि मैं VMware में भी इंटरनली स्विच कर पाऊंगा कि नहीं. बट आफ्टर दैट it took around 6-7 months of preparation. But उसके बाद whatever I was applying for, I was getting into it. So I had it from Google, Microsoft, OCI, RCSM, Intuit. So काफी सारे ऑफर्स थे उस टाइम पे मेरे पास. Right. So वो था. एंड मेरे लिए डिसाइडिंग पॉइंट एक चीज था कि मुझे लेबलिंग सही चाहिए थी. आई डिडंट वांटेड समथिंग कि ठीक है आप आ जाओ and then we'll see that labeling. And obviously, as a young parent, my daughter is just 2 years now. So, I wanted to spend some time there. So, उसके लिए मुझे time भी चाहिए था. तो I wanted good work-life balance also. So that was my major thing to decide on Microsoft. I heard that okay, they have good work-life balance. And that's what I got at least till this point in time. So Rajmani, that's great to know. And जब भी हम अप्लाई कर रहे होते हैं कंपनीज के लिए, इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं,
देन हमें सक्सेस तो मिलते हैं, जैसे आपको बहुत सारे ऑफर्स मिले, बट उसके साथ कुछ ना कुछ रिजेक्शंस भी मिलते हैं हमेशा, राइट? चाहे Right. वो अपने प्रिपरेशन के इनिशियल स्टेज पे हों, और उस टाइम पे कई बार काफी डिमोटिवेटेड फील होता है कि मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, कि मैं मुझे शायद इतना भी आता ही नहीं है। सो लाइक आई एम श्योर आपके साथ भी थोड़ा बहुत ऐसा हुआ होगा। सो हाउ डिड यू डील विद इट एंड हाउ डिड यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड कि मैं, हाँ, ये कंपनी में नहीं हुआ बट नेक्स्ट कंपनी में निकाल सकता हूँ? ओके, तो वन थिंग विच हैव हेल्प मी इज कि जब मैंने 6 महीने के लिए प्रिपेयर किया, तो अब ऐसा नहीं कि चलो ठीक है पहले दूसरे राउंड में बाहर हो रहे थे, मतलब इट वाज गुड, मैं मतलब ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज तक पहुंच पा रहा था, हम्म। राइट। बट वहां से ऑब्वियसली 4 से 5 रिजेक्शंस काइंड ऑफ इन अ वीक टाइम, इन अ वीक टाइम फ्रेम, या मतलब सारे के इंटरव्यू में दे रहा हूँ, और सारे के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड में क्लियर कर पा रहा हूँ, बट फाइनल हम्म। राउंड में जो है सारे का ऑलमोस्ट एक वीक में शेड्यूल्ड है, और देयर आई गॉट रिजेक्टेड। तो ऑब्वियसली इवन आई गॉट डिप्रेस कि ठीक है, लग नहीं रहा है कि आई विल बी एबल टू, जब मैं इनका नहीं कर पा रहा हूँ हम्म। तो बिग टेक का क्या ही कर पाऊंगा टाइप से। हम्म। बट ठीक है, आई आई हैड अ मेंटर हु वाज रियली बिहाइंड मी ऑलवेज। मैंने उनसे डिस्कस किया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम्म। राइट, एंड देन ही हेल्प मी कि ठीक है, इट्स नॉट जस्ट यू शुड नॉट डिफाइन योर बाउंड्रीज विद वन इंटरव्यू और टू इंटरव्यू। हम्म। बेसिकली ऐसा नहीं कि अगर आप एक मिड लेवल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का इंटरव्यू नहीं निकाल पा रहे हो तो आप टॉप का नहीं निकाल पाओगे, राइट। सो यू हम्म। नीड टू ब्रेक दैट स्टीरियोटाइप। और मतलब क्योंकि ये होता है कि आप किसी चीज के लिए फिट नहीं थे, या आप उस टाइम पे उतना प्रिपेयर नहीं थे, आप वहां से लर्निंग लेके आगे बढ़ो, एज सिंपल एज दैट। Sometimes तो it's वही not मैंने, even your day. Maybe the interviewer is not the right fit for you. राइट, कभी भी कुछ भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो शायद आपने कभी पढ़ा ना हो, कुछ भी मिस हो जाए. So there are a lot of factors, right? हाँ, सो समटाइम्स व्हाट इवन आई हैव रियलाइज्ड इज कि इंटरव्यूअर्स जो है वो डीप में जाते हैं जिस चीज पे वो काम कर रहे होते हैं। मे बी हम्म। आई एम फ्रॉम सिक्योरिटी बैकग्राउंड, लेट्स से वो नेटवर्किंग नेटवर्किंग पे काम कर रहे हैं, तो हम्म। दे वांट टू गो डीप ऑन दैट नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, और आपने नेटवर्किंग छुआ ही नहीं है काफी टाइम से, तो हम्म। आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्या आंसर करना है, तो हैपेंस। हम्म। तो बेसिकली एवरी इंटरव्यू एंड एवरी कंपनी हैव इट्स ओन पैटर्न, तो ऐसा नहीं कि आप एक में रिजेक्ट हुए हो तो आप दूसरे में भी रिजेक्ट ही होगे, हम्म। ऑब्वियसली। मतलब कॉन्फिडेंस ऑलवेज कम्स फ्रॉम नॉलेज इज व्हाट आई बिलीव, राइट। तो जब आप मोर एंड मोर यू प्रैक्टिस, मोर एंड मोर यू गेट इनटू इट। तो हम्म। वही था मेरे लिए कि ठीक है, मतलब मैं रिजेक्ट हुआ हूँ, आई विल स्टिल अप्लाई टू द अदर अदर कंपनी, और लेट्स सी हाउ इट गोज, राइट। बट हाँ, एक चीज मेरा हमेशा से था, द थिंग दैट यू आस्क्ड, राइट, हाउ डिड यू kept yourself motivated, मतलब जब मुझे, मैं आके वो क्वेश्चन नोट करता था कि ठीक है भाई ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया है, हम्म। अगर जस्ट गो गूगल इट आउट, तो उसके बारे में नॉट ओनली यू विल गेट फॉर दैट क्वेश्चन, आई मीन हम्म। देयर विल बी वेरियस लिंक्ड क्वेश्चन दैट यू कैन सी नाउडेज इन यूट्यूब सजेशंस और आई मीन गूगल सर्च सजेशंस। मैं वो जनरली कोशिश करता था कि मैं एटलीस्ट उस टॉपिक को टोटली कवर करूं, हम्म। तो rather than sitting back and crying कि ठीक है मैं रिजेक्ट हुआ, I used to follow the other path. I used to just read more and more about that, and that's what I feel that have helped me actually. राइट, जैसा आपने कहा, मतलब फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए, पास्ट पे देख के कुछ फायदा नहीं है, पास्ट की तरफ देख के रो के कुछ फायदा नहीं है. एंड आई Right. थिंक राजमनी, दैट्स वेरी इंस्पायरिंग, जो भी आपका स्टोरी रहा है अब तक, इट्स वेरी इंस्पायरिंग. एंड एक जो नेवर गिव अप एटीट्यूड होता है, सो यू आर अ, आई थिंक, ए ह्यूज एग्जाम्पल फॉर दैट. एंड यू नो, बहुत सारे आई एम श्योर व्यूअर्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अभी काफी एक सिमिलर स्टेज से गुजर रहे हैं, जैसे आप, जिससे आप गुजरे हो. So, any advice for such people who also want to work at big tech companies like you, and but right now they are struggling? I will say, I mean, practice is the only thing that you have control over, right? और आप ये कभी मत सोचो कि ठीक है मैं नहीं कर पाऊंगा, मतलब सब वैसे ही है, मतलब यू जस्ट सी माई जर्नी, राइट। आई स्टार्टेड फ्रॉम नॉट हैविंग अ जॉब in same Bangalore and working at Microsoft, Hmm. right? So if I can do it, I was not a brilliant student, I can say, right? मैं कभी बैच में टॉपर नहीं रहा हूँ, राइट। आई वाज काइंड ऑफ मीडियोकर, एवरेज ही था, हमेशा से नीचे नहीं था ऑब्वियसली, Hmm. बट हमें हमेशा एवरेज ही था। और वहां से आई मीन द थिंग दैट हैव हेल्प मी इज कि हमेशा मेरे पास एक गोल रहा है कि ठीक है अब मैंने ये कर लिया है, अब व्हाट्स नेक्स्ट फॉर मी, और Hmm. उसके लिए क्या क्या चाहिए, यू पेन इट डाउन, राइट इट समवेयर कि ठीक है, मतलब सिर्फ ये करना नहीं है कि कैसे होगा, यू ऑल्सो लुक फॉर दैट,
watch Hmm. more and more podcasts, get inspired whenever you are not Hmm. inspired, right? That's motivation dose for me. तो आप वो देखो, सीखो कि क्या आपको करना है, कैसे कर सकते हो आप. एंड बेस्ट थिंग इज टू हैव अ मेंटर इन योर लाइफ, राइट? वो कहीं से भी हो, बट द थिंग दैट यू वांट टू अचीव, in case you have a mentor, that Hmm. is your journey, right? So you just find out someone, right? And if not, you anyway have lots and lots of resources on YouTube. Just watch those things, Hmm. or just, I mean, take some break. Obviously, जब आप एक आपने कुछ पा लिया है कि ठीक है, दिस इज द थिंग दैट आई हैव अचीव, टेक सम ब्रेक, एंजॉय दैट मोमेंट. बट उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप की तैयारी करते रहो कि ठीक है, ये मुझे करना है और ऐसे करना है. Hmm. तो if you keep on learning, the things will fall into place. जरूरी नहीं कि आप हमेशा शुरू से ड्रीम लेके चलो. जब मैं एचपी में था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं माइक्रोसॉफ्ट या गूगल में काम करूंगा, राइट? Hmm. पर एक चीज था कि मेहनत मुझे करनी, मुझे सीखना है जो मुझे मिल रहा है. Hmm. एंड इवेंचुअली सब कुछ मिलता गया धीरे धीरे. Hmm. Yeah, I think that's a great point you made. कि practice is the most important thing, and having a strategy कि next मुझे क्या करना है, that is also one of the most important things. So आप जितने भी resources ले लो, जितने भी पता कर लो कि क्या मुझे पढ़ना है, जब तक आप खुद से practice नहीं करोगे, तब तक नहीं होने वाला. आपकी आपकी लाइफ में क्या मतलब, सिर्फ जॉब क्या और कुछ भी अच्छा नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे उस चीज की. एंड राजमणि, इट वाज ग्रेट कनेक्टिंग विद यू. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड बहुत इंस्पायर हुए होंगे व्यूअर्स भी, आई एम श्योर. अगर आप भी राजमणि से बात करना चाहते हो, वन ऑन वन बात करना चाहते हो, तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. सो मेक श्योर यू चेक देम आउट. एंड राजमणि, वंस अगेन थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट, एंड इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू. Thank you so much for having me here. And yeah, it was great meeting you too.